This is very nice poem, The Listeners. This is very nice poem, The Listeners. And in this poem, it happens what is going to be happen if we do not listen properly. If we don't listen properly, so we can be confused. हम confuse हो सकते हैं, हाँ? And in our life, confusion is sure. Confusion होना है. So how to reduce it? इसको reduce कैसे करें? That is a different thing. लेकिन यहाँ पे the listeners हैं, सुनने वाले हैं, the listeners who listens. So now I am just making the audio and video of it through the PDF that you have sent me. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence chomped the grasses of the forest's ferny floor. So, is there anybody there? So there is a traveler, and he knocked the door. He knocked the door of a building. You can see the door, which is of brown in color. He knocked the door and said, "Koi hai? Is there anybody there?" And he was riding on a horse, so his horse was chomping the grasses. Means chewing after biting noisily. Like this. And there was a ferny floor. Ferny floor means there were a lot of grasses were there. And a bird flew up out of the turret. Above the traveller's head. And he smote upon the door a second time. "Is anybody there?" he said. So suddenly then a bird flew up out of the turret. Turret is a small tower. Small tower in the corner of a large building. Here you can see this part is called turret, where you can see a bird, this long line. Fine. So there's a small tower in the corner of the large building. So there's a kind of tower. From there was a bird. The bird flew up out of the turret. It came out of the turret, and then again he said, "Koi hai? Is he anybody there?" But no one descended to the traveler. No head from the leaf fringled still, leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still. But no one came to the traveler. Descendant means come down. No one came down to open the gate for the traveler. Even there were no head from the leaf fringled sill. It means the border of the window is called leaf fringled sill. Sill means window. From the window, no one came to see who is that. होता ना कभी आप डोर नॉक करते हो और आप बाहर आकर देखो कौन है, who is there. तो एक सर सा नज़र आता किसी को, मतलब हेड से नज़र आते हैं लोगों के. In such manner, a head was seen, but there was no head. कोई head ही नहीं था. No head from the leaf fringle sill, that is the window. Leaf fringle sill का मतलब यहाँ पे window से है, क्योंकि वहाँ पे लीफ से वो कवर्ड होता है. पुराने टाइम के विंडोज़ जो होते थे, घर जो होते थे बड़े बड़े, वो जो है दे यूज टू हैव देयर प्लांट्स विच हैव देयर स्पाइंस. तो वो जो आपके स्पाइंस थे वो उस तरह से घूमते रहते थे, लताएं जो घूमती थी, तो कवर्ड हो जाता था. तो दैट्स कॉल्ड लीफ फ्रिंगल. दैट मीन्स कवर्ड विद द लीफ. लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रेज आइज. तब उसकी आंखों में, दैट मीन्स द बॉयज वाज हैविंग ग्रे आइज. And the boy was looking perplexed, means confused, and still means standing.
but only a host of phantom listeners. तो फैंटम लिसनर्स को यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शैडोई बींग्स फ्रॉम इनसाइड द बिल्डिंग हु लिसन क्वाइटली. शैडोई बींग्स, कुछ शैडोज होती हैं. ओहो, कहीं भूत तो नहीं, पता नहीं. डरना मत, डरना मना है. सो अब मुझे भी नहीं पता, आई डू नॉट नो कि अंदर कौन है, बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स. कुछ फैंटम लिसनर्स थे, यानी कि शैडोई बींग, कुछ शैडोज थे जिन्होंने चुपचाप से सुना. दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन, जो उसमें ड्वेल्ट मीन्स मूविंग, मूव्ड, वो घूम रहे थे उस अकेले घर में. देन स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट, तो वो खड़े हुए और शांति से सुना मूनलाइट में. टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, मतलब कि बाद में पता लगा वो ये आदमी भूत नहीं है. ओह थैंक गॉड. द वर्ल्ड ऑफ मैन का मतलब यहाँ पर हो गया इंसान, भूत नहीं है. चलो नाउ नेक्स्ट. स्टूड थ्रॉन्गिंग द फेंट मून बीम्स ऑन द डार्क स्टेयर, वहीं पे वो खड़े थे. थ्रॉन्गिंग द फेंट मून बीम, जहाँ पे मून की रोशनी पड़ रही थी डार्क स्टेयर पे. दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, और वो एम्प्टी हॉल की तरफ जा रहा था. Hearkening in an ear stood and shaken, जहाँ पे hearkening का मतलब listening, hear से बना hearkening. ये hearkening कोई वर्ड नहीं है, दैट इज़, ये hearkening कोई वर्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बनाया हुआ है. फाइन, ये सिर्फ और सिर्फ बनाया हुआ है. सो hearkening in an ear stood and shaken. अब क्या सुना उसने, क्या हवा के हिलने की आवाज़ आई, क्या शेक की आवाज़ आई, ये हम पढ़ेंगे पोएम के नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.